Hello everyone. I hope you guys are doing absolutely great. तो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है टेस्टनेट के ऊपर. टेस्टनेट बेसिकली स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज नेशनल विजिबिलिटी टेस्ट. It is an exam which is conducted for Tata Institute of Social Sciences. द प्रोमिनेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के हैं वो है मुंबई कैंपस, तुलजापुर कैंपस एंड दी गुवाहाटी कैंपस. नाउ जो मुंबई कैंपस है दैट इज एक्चुअली द मेन कैंपस, और वहीं पे जो सबसे फ्लैगशिप कोर्स है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का वो एच आर एम एंड एल आर. राइट. एच आर एम एंड एल आर इज एक्चुअली अवेलेबल इन टिस मुंबई ओनली. इट इज नॉट अवेलेबल इन तुलजापुर और गुवाहाटी कैंपस. राइट. The other course which is very famous in Tata Institute of Social Sciences in terms of placements is actually ODCL, which is Organizational Development, Change and Leadership, but it actually requires a work ex of around 2 years, right? See, Tata Institute of Social Sciences is a very renowned institute when it comes to very social sciences based for social sciences based courses. For example, the Masters in Social Work is also very famous of Tata Institute, right? तो काफ़ी सारे जो सोशली अलाइंड कोर्सेज हैं उसके लिए भी ये इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है. राइट. बट यस, इनका जो फ्लैगशिप कोर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली एच आर एम एंड एल आर ही है. राइट. एंड सिमिलरली द ओ डी सी एल इज ऑल्सो, आई मीन दे प्रोवाइड अ वेरी गुड आर ओ आई. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now, if we talk about the paper pattern, right? So the paper pattern of this exam is that this exam actually contains three sections, right? Number one is general awareness, then again English, then maths and LR, right? If I were to talk about the questions per section, then it is a 40, 30, 30 respectively, and the difficulty level is actually moderate to difficult, right? For general awareness, whereas for the other two sections, that is English and maths, it is actually moderate. It is neither too tough nor too easy, right? A big catch over here is that there is no negative marking in this exam, right? So you can actually mark as many questions. Okay, if you have a good guesswork, that can actually work over here. For every correct marks, you get one question. For every correct question, you get 1 marks. I'm sorry, right? And as अभी जैसे मैंने बताया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी, सारे चाहे सारे मार्क कर दो. राइट. क्या पता कोई गेस ठीक बैठ जाए. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आती है दैट हाउ शुड वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. राइट. सो बिफोर इवन स्टार्टिंग एनीथिंग, आई थिंक यू शुड एट लीस्ट हैव अ बिट रफ आइडिया कि हम किस चीज में एंटर कर रहे हैं. राइट. और वो चीज जो है वो बेसिकली मॉक्स हमें बताते हैं. राइट. सो बिफोर इवन स्टार्टिंग द टेस्टनेट एग्जाम, आई थिंक यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव 2 free mocks. राइट. 2 free mocks and one should be scheduled in morning और दूसरे वाला आफ्टरनून. Why morning and afternoon? Very simple. Morning में माइंड फ्रेश रहता है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस अलग दिखेगी, एंड आफ्टरनून में जैसे जैसे हम जाते हैं हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. राइट. और हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल टेस्ट एग्जाम का सेशन है, राइट, वो एक्चुअली आफ्टरनून में ही आ जाए. राइट. तो हमें दोनों कंडीशंस के लिए प्रिपेयर रहना है, बिकॉज एज वी गो डाउन ना, जब जैसे हम आफ्टरनून में जैसे जैसे जाते हैं दोपहर के टाइम पे, तो हम देखते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो जैसे डिप्लीट होती रहती है. राइट. तो एक बार हमें दोनों सिनेरियोस का हमें पता चलना चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए. राइट. अब जैसे हम अपने वीक मॉक एग्जाम्स देंगे तो रिजल्ट आएंगे ऑब्वियसली. राइट. देन उस वो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, आप उसे जॉट डाउन कीजिए अपने वीक कॉन्सेप्ट या और मेन कॉन्सेप्ट. राइट. अगर आप उसे अपने वीक और मेन कॉन्सेप्ट को जॉट डाउन करेंगे, राइट, और उसके बाद आप देखें कि जो आपका वीक एरिया है आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें आप अनबीटेबल हो जाएं. राइट. ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. because at the end of the day you have to qualify this exam and you cannot actually leave any stone unturned. Right. Then my humble request to you is that you should try scoring maximum marks in the TISSnet written exam. Why? Because उसके बाद एक्चुअली और भी प्रोसेस होता है जैसे एक्सटेम्परी, जीडीपीआई, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट. उसमें कहीं आई डोंट नो, वी डोंट नो कि उसमें हम कैसा परफॉर्म करेंगे या कैसे हमारे मार्क्स इवेल्युएट होंगे. राइट. बिकॉज वी डोंट नो द बेसिस
on which our marks are actually getting evaluated in PI or GD, etc. Right? So what is there in our hand? We have TISSnet in our hand. We actually have the opportunity to score maximum in TISSnet. Right? So वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं. तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी अपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के अंदर, प्लीज टिस्नेट रिटन एग्जाम में और आप ज़्यादा फोकस करें. राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रिपेयर कहाँ से करें, then you should always go, you can, I mean, always check out this website TISSking.com. Our website is TISSking.com. Over there you will actually find detailed syllabus with detailed sort of courses which are made specially for tests, right? Also you can also find various mocks, strategies videos, as well as subject wise strategy video of all the subjects, right? So you can just go to TISSking.com और वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Right? Moving on to the next slide. Now coming to the second section, right? So reasoning also plays a very major role in TISS. Now the thing is that the TISS reasoning is actually very sort of moderate in nature, right? So I would request all of you to actually enhance your reasoning skills. You should focus on puzzles, blood relation, coding, decoding series, right? Similarly, verbal reasoning also plays a very important role in TISS, right? Because verbal रीजनिंग एंड कैलेंडर, दे इनका जो कॉम्बो है वो बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट में. आई वुड रादर अर्ज ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली फोकस ऑन कैलेंडर अ लिटिल बिट मोर, राइट? बिकॉज कैलेंडर्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और उस पर थोड़ा सा फोकस उनका रहता है, राइट? आप और ब्लड रिलेशन, बट एज आई जस्ट मेंशन कि पजल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, राइट? सीरीज भी बहुत सारी तरह की होती है, राइट? और सिमिलरली इन तीन टॉपिक्स पे तो आप मेजर फोकस रखें अपना. आप बिलीव मानिए इन्हीं के आसपास कोई आएगा, ठीक है? इससे ज्यादा बार वो नहीं जाएंगे, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, general awareness actually plays a very important role in TISS, right? Why? Because it is the only section which has a sectional cutoff of 14 marks, right? Earlier it was 12 also, but like for example, when if the paper is tough, so they actually reduce the cutoff, like maybe 12, 13 marks. ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 14 से 12 कर दिया था last time, right? But it has a sectional cutoff, and it is the only section which has a sectional cutoff in the entire TISSnet exam, right? So I request you to focus on the modern and ancient history. I request you to focus on polity, science and tech, sports, awards, environment, art and culture, current affairs. See, अब यहाँ पे क्या है ना कि जो टिस का एग्जाम है वो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो साइंस बैकग्राउंड वाले और एक होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले. तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको एक शायद कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है व्हेन दे एक्चुअली स्टडी फॉर पॉलिटी, एंड पॉलिटी, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री, राइट? सिमिलरली इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट वगैरह वो शायद आई गेस पहले वो पढ़ चुके होते हैं. बट जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक साइंस एंड टेक का और आई गेस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा एज मिल रहा है. सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट माई ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू टेक दीज वेरी सेक्शन वेरी सीरियसली, irrespective ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू हैव अ साइंस बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड. आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ साइंस का स्टूडेंट तो मैं सिर्फ साइंस वाले करके चला जाता हूँ, ऐसा नहीं चलता. बिकॉज व्हाट इफ की अगर क्वेश्चन ही ना आए, बहुत ही कम साइंस से आए, तो आप फिर क्या करेंगे, राइट? ऑल्सो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. करंट अफेयर्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिस्नेट एग्जाम. कौन से करंट अफेयर्स करने हैं? सो करंट अफेयर्स रिगार्डिंग न्यूज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोशल न्यूज़, अवार्ड्स, राइट? फॉर एग्जांपल मे बी भारत रत्न, भारत विभूषण, ठीक है, और पद्म विभूषण, सॉरी, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड्स, राइट? Similarly, best film awards, right? National awards for film, etc. Oscars, right? Golden Globes, etc. So basically, जो भी like जनरल डे टू डे अवेयरनेस वाले एग्जाम है, इसके लिए मैं आपको जैसे ज़्यादा से अच्छा सजेस्ट ये भी करूँगा दैट यू शुड एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स. अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, तो आपकी मतलब जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो सॉर्टेड रहेगा, राइट? अब नाउ अब लाइक फॉर एग्जांपल यू माइट से कि पुराने वाले कैसे करेंगे, राइट? जो जनवरी से स्टार्ट थे, तो यू कैन ऑलवेज रेफर आवर वेबसाइट TISSking.com. आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे. यू कैन ऑलवेज गो ओवर देयर एंड एक्चुअली find current affairs over there as well, right? Moving on to the next slide. Now comes his verbal. See, verbal also plays a very important role for especially RCs, I think. And RCs तो इतने important है इसमें, like I actually cannot emphasize more on RCs than anything else. RCs last time भी काफी ज़्यादा tricky आए थे, so I would rather suggest that you should actually focus on RCs more. Now, how can we actually develop our RC skills?
RC skills can simply be developed by reading one article of editorial daily, either of the Hindu or the Indian Express. I would suggest that you should read the Hindu editorial, ठीक है? और हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, मतलब इफ लेट्स से यू आर अ नूब, राइट, अभी आप न्यू भी हो, आपने कभी न्यूज़पेपर खोला ही नहीं, देन यू शुड एक्चुअली गो फॉर द इंडियन एक्सप्रेस एंड रिवर्ट टू हिंदू एज सून एज पॉसिबल, राइट? Now coming to RCs, so we have to actually study for RCs and vocab, right? For vocab, we actually need to do this book which is called as Norman Lewis book. Norman Lewis Word Power Made Easy. It is a very very good book. You should actually do that book so as to improve your vocab, right? You should you should also focus on odd one outs, analogies, synonym antonyms are very important. Then again, grammar is important. Word choice, sentence correction is important. Analogies and verbal reasoning is also very important. See, the main focus area here should be RCs and vocab. बाकी सब जो चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी. RCs आपकी रीडिंग से बनेगी. vocab मैंने आपको बताया, वर्ड पावर मीडिसी नॉर्मल न्यूज की बुक है, right? And you can also refer our website TISSking.com, right? Moving on to the next slide. Quantitative aptitude is a very important part of it. Is actually a make or break. I'll tell you why. See, most of the students who have actually appearing for tests, they have either studied mathematics or they have not studied mathematics, right? There are only two types of students who have actually pure social science background, or those who are actually engineers or maybe some other like aspirants of other management exams, and they are appearing for tests because maybe उनका शायद वहाँ नहीं हुआ है, or maybe they are actually specifically focusing on tests, right? So if you have, if you are one of the like the former category जिसने आज तक कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं, कभी मैथ्स देखा नहीं, मैथ्स से डर लगता है, राइट? तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें, राइट? क्यों? क्योंकि मैथ्स में चाहिए होती है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों. सो लाइक इफ यू एक्चुअली वांट टू फोकस ऑन developing your mathematical skills, you should actually start a little bit early, right? इसमें अब आप क्या करें कि जब से आप एक तो सेट थ्योरी पे फोकस कीजिए, ठीक है? उसके बाद पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैट्स, ज्योग्राफी ट्रिगो, फिर देन फंक्शन एंड ग्राफ्स, रेशियो एंड परसेंटेजेस, और बेसिक अरिथमेटिक और डीआई, इन पे आप फोकस कीजिए, राइट? और मतलब अगर आप किसी जैसे एडिशनल बुक से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो रेफर द टिस्किंग मटेरियल, राइट? तो वहाँ पे भी आप एलओडी लेवल वन को ही सॉल्व करें. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टिस, राइट? आप कैट की, ये कोई कैट का एग्जाम नहीं है यहाँ पे मैं आपको कुछ और रेकमेंड करूंगा. फॉर टिस आई थिंक एलओडी लेवल वन इज मोर देन इनफ, राइट? Moving on to the next slide. Now, the target score. See, if you are a general candidate, ठीक है, I'll be very honest with you. You should actually target test 70 plus in the TISSnet written exam, right? TISSnet written exam में आप 70 plus लेके आइए अगर पेपर इजी और मॉडरेट है. अगर पेपर थोड़ा टफ है तो 65 प्लस. यहाँ पे भी 60 लिखा है और 60 प्लस 65 प्लस. आई थिंक फॉर सेफर साइड इट शुड बी 65 प्लस. ओके. For example, the last year, the final cutoff for HRM was actually 71.31. So the person who is actually scoring 71.31, right, in the TISSnet exam last year is currently sitting in TISS, right? Similarly, for labor studies and practices, it is 71.99, right? एनालिटिक्स में 69.24. इनफैक्ट टेस्ट का एनालिटिक्स का प्रोग्राम इतना फेमस है आज के टाइम पे, वो काफ़ी बूम कर रहा है, राइट? data analytics course of TISS is actually very it is a new program but it is actually booming, right? बहुत अच्छी placements निकल रही है वहाँ से, right? Similarly for the ODCL program it was 67.86 and the important and social entrepreneurship is at 68.25. So I think you can actually have a look at how close the competition and moreover आपकी जो written exam है उस पे भी थोड़ा सा आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा. बट अगेन आई विल बी एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि यार आप रिटर्न एग्जाम को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाइए. आप रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की कोशिश कीजिए, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. या सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टिस्सनेट. आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप मॉक्स पे फोकस कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स पे आप फोकस कीजिए, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स फोबिया है तो आप उससे पहले थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर लीजिएगा, राइट? और इंग्लिश में फोकस कीजिए, स्पेशली द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा, ठीक है? और भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप TISSking.com की वेबसाइट पे जाइए. आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी कोर्सेज विद डिटेल्ड स्ट्रैटेजी एंड वीडियोस आपको मिल जाएंगे विद मटेरियल एज वेल. और
Like for example, if you need material for current affairs, or maybe if you want to study for TISSnet specifically, you can find actually courses on TISSking.com. So I would request you humbly to visit TISSking.com so that you can actually gain much more information on TISS and strategize accordingly. Right? Thank you.